कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छी तरीके से होंगे। देखिए हम लोग केमिस्ट्री का फिजिक्स का सेकंड लेसन लेकर के चले हुए हैं, वेक्टर एनालिसिस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। सीबीएसई के ऑल स्टूडेंट्स व्हिच कैन वांट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स विथ एक्सपेरिमेंट एंड इजीली दैट कैन आल्सो अटैच विथ मी। तो फिजिक्स को बिना ज़्यादा बोर लिए एकदम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ साथ हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो नाउ सी let us about the vector analysis and projectile motion. First of all, we know that about what is a vector quantity. You know that about the quantity. Quantity means anything which can be measured, that is known as the quantity. Anything which can measure is called quantities. Okay, you know that there are two types of quantity, vector quantity and scalar quantity. First of all, we know that's about the vector quantity. The quantity which has requirement of both of our magnitudes and direction. To representation, the quantity which have requirement of both of our magnitudes and direction, that is known as the vector quantity. The quantity which have requirement to represent both of magnitude and direction is called vector quantity. Okay, as you know, that's displacement. Example, displacement, velocity, acceleration, force, momentum, impulse, etc. That's quantity are the vector quantity, because when we represent displacement, we have both of requirement, magnitudes and direction. As examples, when any person, for example Ram, go to A to B, and after that he go to C and D, and he returns to at the point of C. Suppose that is 100 meters, that is 100 meters, that is 50 meters, and that is 50 meters, and that distance of straight, that straight distance is 30 meter. Then displacement only distance between A and E, that is the displacement, and distance will be the total path of length. Total path of length, that means 100 and 100 300, that is the distance. But 30 meter is displacement. You can also define it the straight distance between 2 points, that is known as the distance. Is when we force applied, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करते हैं तो या तो हम आउटर फोर्स करेंगे या तो इनर करेंगे, या उसे बाहर की ओर धक्का देंगे अंदर की। उसमें क्या होता है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन दोनों, परिमाण और दिशा, जैसे सपोज एग्जांपल मैंने बोल दिया कि 50 न्यूटन अपर साइड, इसमें क्या हो गया, 50 न्यूटन हमारा मैग्नीट्यूड्स हो गया और अपर साइड क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो जिसमें दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, second is the scalar quantity.
Scalar quantity, the quantity which have requirement only magnitudes, not direction. The quantity which have only required magnitude, not direction. इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. ओके, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है बट डायरेक्शन की नहीं. एग्जांपल्स जैसे स्पीड हो गया या डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, ऑल क्वांटिटी दैट इज स्केलर क्वांटिटी. आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी. सिंपल सा डिफिनेशन थी, द क्वांटिटी विच हैव रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोथ ऑफ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, एंड द क्वांटिटी ओनली हैव रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड्स नॉट डायरेक्शन. इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी. ओके, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल सिंपल से लैंग्वेज में बताया. जैसे कोई पर्सन ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई चला गया, उसने काफी डिस्टेंस कवर किया, बट ओनली अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो जहां से चला था और जहां पे वो लास्ट पॉइंट है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, एंड टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, दैट इज द डिस्टेंस. ओके, now see about the types of vector. We have read about the vector analysis, so we only reads about vector quantity. आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिएगा. Types of vector. There are many types of vector. Let us see. Equal vector, opposite vector, null vector, unit vector, perpendicular vector, and last is orthogonal vector. Okay, let us see about the equal vector. That are types of vector quantity. First is equal vector. You know that it's equal vector. The vector which magnitudes and direction both are equal. Magnitude and direction both are equal. जिसमें मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, दैट इज द इक्वल वेक्टर. फॉर एग्जांपल्स, जैसे मैं एक फिगर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं. इन दिस फिगर लेट अस सी दैट ए एंड बी, दैट इज द इक्वल वेक्टर बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड्स आल्सो इक्वल एंड इट्स डायरेक्शन इज आल्सो इक्वल, दैट इज द इक्वल वेक्टर. अपोजिट वेक्टर्स, द वेक्टर which magnitude equal but direction opposite. ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड्स तो इक्वल हो, मैग्नीट्यूड्स उसके इक्वल हो बट उसके डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, दैट इज द अपोजिट वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल्स, ए एंड
B. You know that's you can see that vector A and vector B, that's magnitudes are equal. That's magnitudes are equal, but direction is opposite. दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, दिशा देखिए सॉरी लंबाई दोनों की सेम है, बट दिशा दोनों की अलग है. दैट इज द अपोजिट वेक्टर्स. नल वेक्टर्स, द वेक्टर्स which magnitudes is 0, ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड्स क्या हो, 0 हो, दैट इज द null vectors. Okay, that is the point vector only. Unit vectors, the vectors which magnitudes is unit, that means one इकाई, magnitudes that is one, it's can represented a cap equal to vector a upon mod of a, where a cap is the unit vector. Okay, perpendicular vector, the vector which are in perpendicular, that means it's have attached with 90 angles, as like A and B. The angle between A and B, that is 90, which is known as the perpendicular vectors. The most important vector, orthogonal vectors. You know that's orthogonal vectors. It is a three-dimensional geometry. The vector which are in three-dimensional geometry, that is known as the orthogonal vectors. For examples, x-axis, y-axis and z-axis. X-axis along unit vector I cap, y-axis along unit vector j cap, and z-axis along unit vector k cap. Then we can represent at any points any vectors a is equal to x I cap plus y j cap plus z cap. That is the orthogonal vectors. Okay, I hope you can understand vectors, types of vectors very easily. Let us see addition of vector. Addition of vector, that is very important for you. You can also make a notes. एडिशन ऑफ वेक्टर, कैसे हम वेक्टरों को ऐड करते हैं? यू नो दैट्स देयर आर टू मेथड्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल मेथड एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर मेथड. ट्रायंगल मेथड्स, डू यू नो अबाउट द ट्रायंगल मेथड? First of all, suppose there are two vectors in direction and magnitudes a and b. First of all, we draw a vectors is the same direction which are given. जैसे वह दिया गया सेम उसी तरह से पहले हम वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं, एंड देन वी पुट वेक्टर b the tail of b at the head of a in the same direction as like, and then when we add the tail of a with the head of v, that is the addition of vector a and vector b. सबसे पहले जो वेक्टर दिया गया उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं,
देन जो सेकेंड वेक्टर है उसको वेक्टर ए के हेड पे रख करके सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड्स में हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. आफ्टर दैट्स the tail of A and the head of B after combinations, that's magnitudes known as the addition of vector A and vector B. Okay. Second method, quadrilateral method है. हाइपोटेन्यूस द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. इन दिस मेथड सपोज देयर टू वेक्टर्स ए एंड बी आर गिवन इन द एंगल ऑफ थीटा. द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी that is represented the orthogonal of A and B, we can find its result is like when vector that is A, that will be also A. Suppose that is B and that will be the also B, that is theta and so will be that's theta. You know that's suppose that is the B, it will be the B cos theta. Suppose P, Q, R, S and T. We have find the resultant of PR. Okay, हमको PR निकालना है. इसका रिजल्टेंट परिणामी क्या हो, जैसे यहाँ पे A प्लस बी है वैसे यहाँ पे कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए इन ट्रायंगल RST पाइथागोरियन ट्रिपलेट Pythagorean theorems, RS equal to ST plus RT. That is equation number first. Hypotenuse, the square of hypotenuse that is equal to sum of the two both of sides. In triangle same is similarity in triangle PRT, we can also write its PR square equal to PT square plus RT square. From equation first we can write RT square equal to RS square and ST square. So PR square equal to PT can be divided in two parts, PS and ST. PS and ST. And here we can find RT square equal to RS square minus ST square. RS square minus ST square. Open the square of PS square plus ST square plus 2 PS ST plus RS square plus ST square. You can see that's ST square can be cancelled. PS, you know that's PS, that is A square. RS square, that is B square plus 2AB cos theta. Suppose that is resultant R, so R equal to root A square plus B square plus 2AB cos थीटा. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं अगर कोई दो वेक्टर्स ए और बी किसी एंगल पे दिए गए हों तो उनका जो रिजल्टेंट होता है दैट इज द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. इसको हम चतुर्भुज मेथड से भी बोलते हैं. और यहाँ पे देखिए एंगल भी आप फाइंड कर सकते हैं इसका.
suppose that is the theta, that is perpendicular and that is base, then tan theta equal to that length is RT अपॉन ST। ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चंस बहुत से मिलेंगे जो हम आगे देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, लेट अस सी अबाउट द सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब इसको नोट कर लीजिएगा, चार्ट में मैंने इसको बताया है। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के केवल वन मेथड्स होते हैं, ट्रिंगल मेथड ही। Let us say about the subtraction of vectors. Suppose there are two vectors A and B that are given in magnitudes and direction. When we find the subtraction of A minus B, first of all we draw a vector A in the same direction and magnitudes. Then we have to find vector A minus vector B. When we subtract vector B, we can opposite direction its and add with the vector A. After combination of tail of A and with the head of B, that is vector A plus minus of vector B. ये किसी वेक्टर को अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम हो जाती है। इस डायरेक्शन में B था तो अगर हमने उसको ऐसे कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस B हो जाएगा। और जैसे हम ऐड करते हैं, ऐड का जो रूल होता है, सेम वेक्टर B के हेड टेल को इसके हेड पे रख करके ड्रॉ कर लेते हैं और A के टेल को वेक्टर B के हेड के साथ जब हम ऐड कर देते हैं, दैट इज वेक्टर A प्लस माइनस और वेक्टर B। इट्स कैन आल्सो रिटेन एज वेक्टर A माइनस वेक्टर B। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजीली। नेक्स्ट टॉपिक इज द मल्टीपल ऑफ वेक्टर, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Multiple of vector. There are two types of multiple of vector. First is dot product and second is cross product. You know, let us see about the dot product. Dot products can defines the dot product of A and B, that is the magnitudes of A and cosine of B. Suppose two vectors A and B at the angle of theta. The dot product of A and B, vector A and vector B, that is the magnitudes of one vectors and cosine with the second vectors. So we can write its vector A dot vector B equal to AB cos theta. Vector A dot B equal to AB cos theta. Where is the theta is the angle between A and B. Property you can see that property of dot product. First, commutative law. Commutative law, that is the follow vector A and B. We can write vector A dot B equal to vector B dot A. Second, associative law also follow its associative law, that is vector A dot B plus C, that's vector A dot vector B plus vector A dot vector C. We can multiple with two others. Identity law can also follow its vector A dot 0 equal to 0. The most important, that is orthogonal vectors. ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट्स की कुछ
स्पेशल चीज हम लोग देखते हैं, जैसे आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, दैट इज 1 units. Why? You can see that's I dot I, where you know that's ijk is the units vector, is the along of x y z axis, I cap, j cap and k cap. I dot I means I cos of the angle between I and I, that is 0 degree. It means I is unit vectors, where I is units vector, so 1 into 1 into 1, it means 1. So you have to learn that I dot I or z dot j or k dot k is equal to 1. Second, I dot j or j dot k or k dot I, that is 0. Why? You can understand, because I dot j, it means I j cos of 90 degree. The angle between I and j, that is 90 degree. You know that's the cos of 90 degree, that is 0, so it will be 0. So you have to learn that I dot I or j dot j or k dot k is equal to 1, and I dot j, j dot k and k dot I, that is 0. Examples that is most important. Suppose vector A is equal to x1 I cap, y1 j cap plus z1 k cap, and vector B is equal to x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Suppose we have to find the A dot B. A dot B, that means opposites I j का k का होगा 0 जाएगा. So only we have to dot only x1 x2, that means x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2, that is the A dot B. I hope you can understand with easily dot product. Let us see about the cross product. You can make a solid notes with pause of video. Cross product. Do you know about the cross product? Cross product can also define as the cross product of two vectors, that is the magnitudes of one vectors and sign of second vectors, and can be the represent direction between resultant of A and B with the perpendicular of A and B. It can also write its A cross B equal to AB sin theta. You have seen that A dot B is equal to AB cos theta, but A cross B is equal to AB sin theta. Property cross product first cumulative law. There will be not exist of cumulative law vector B cross A. That means cumulative law not follow the property of cross product. We can write it as like vector A cross vector B is equal to minus vector B cross vector A, because even opposite vectors, that will be the negative vectors. Associative vectors, associative property, that is follow cross product. We can write it A cross B plus A cross C. Third is
identity method. Vector A cross 0 is equal to 0, and most important orthogonal vectors. In every competitions examinations, that is most important for orthogonal vector. You know that suppose any vectors x axis, y axis, z axis, I cap, j cap and k cap, that is the unit vectors. I cross I or j cross j or k cross k is equal to 0. Let us see why. Because I cross I means I sine of 0 degree. You know that sine of 0 degree, that is 0. So same vectors cross, that is 0. But I cross j is equal to k, j cross k is equal to I, and k cross I equal to j. The clockwise circles, it will be the positive, and anti-clockwise, that is j cross I equal to minus k cap, k cross j is equal to minus I cap, and I cross k is equal to minus j cap. I cross j, that is k, j cross k is equal to I, k cross I is equal to j. So I hope you can understand with the simple language and examples of vector quantity, vector analysis. In next video I have take a question with whole of lesson can combine in this lesson, this video.